Okay, so good evening, everyone. We will start this chapter, which is exponents and radicals. Okay, so we will wrap this chapter in today's class only, है ना? Right? Yes. आज के दिन में एक चैप्टर खत्म. हाँ, because ये हम लोगों ने already पढ़ रखा है. Most of things we have already studied, है ना? Right? तो फिर काहूत तो होना चाहिए सर. Yes, Kahoot. We will have Kahoot, right? For this chapter, obviously, we'll have Kahoot. Okay. Now, when you talk about exponents and radicals, right, we know what's the meaning of exponents and radicals. If, for example, when you talk about multiplication was what? Tell me, multiplication was consecutive addition, yes or no? Right? In the same way, when you talk about consecutive multiplication of same number, for example, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, right? So I can say, sir, obviously I can multiply this, I can have a value. But when you talk about this, what is happening? 2 is multiplied 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times. Yes or no? Right? 7 आंसर आ जाएगा. Exactly. So, yes. So I can say that, sir, but this is not very convenient way to write. Yes or no? Right? Exactly. This is not very convenient way to write. So what is exponents and radicals? Basically, it is a way to write consecutive multiplication. Got it? Yes or no? Right? So this is just a way to represent or a way to write consecutive multiplication, right? Or consecutive division, you can say. So it can be as 2 to the power 7. So when you talk about 2 to the power 7, this, tell me, right? 2 is called as base. 2 is called as base. And 7 is called as power. Okay, right, everyone? So now when you talk about this chapter, I told you this chapter is super easy. You just have to use your common sense. Okay, now I guess all of you have already done lots and lots of problems, right? Basic problems with this concept. Convert any number with in terms of, right, exponents, by prime factorization. All we did all those things. So I'm not going to do all those things again. Yes or no? Right? So we will directly start with properties. सर ये आपने एक महीना पहले बताया था, अभी वापस कौन बताता है? So we have already completed around 80% of this chapter, because we are using this again in multiple topics, right? So the only thing that is left is properties. Okay? And there's one very interesting topic, right, in this that we will complete. Okay. So when you talk about properties, the first property, which again I haven't basically told you that this is a property, but we have already used that. For example, if you talk about this, 2 to the power 3 into 2 to the power 4 is equal to what? Tell me. 2 to the power 7. Yes. 2 to the power 7, right? Right? So I can say, sir, what we do? 4 to the power 7, no, sir. Again, right? Last time भी मैंने वही बोला था ना कि what is the meaning of this? This means सर लास्ट टाइम ऐसा सवाल मैंने ही पूछा था सर. 9 into 8 sir. 2. Then you wrote that 2. सर 2 to the power 7 होगा सर. This. So what is this? It is 2 7 times. Yes or no? Yes or no? Tell me. Sir. So that is the property. So if I talk about this, base is same. Yes or no? Right? Yes, sir. Base is same. So I can say, Aditya, Akash, right? Anyone who has like not muted their mic, this. Background Sir, I am muted, sir. There's lots of noise, na? Sir, I am muted. Okay, chalo. So I can say, sir, property one is this. If we have a base can be anything, right? And power is suppose m, and it is multiplied with same base and power is n. I can say this can be as a to the power. Tell me, a to the power. M plus N. M plus N. Very good. Super easy. Tell me, yes or no? Super easy. Yes sir. Yes, sir. Yes. Adding squares. Yes. Okay.
The property one is that will it be like base is always constant? No, it can be anything, no, but it should be same. For example, x to the power 2 into x to the power 3 is equal to what? X to the power 5. 3 plus 4. 5. 5, So right? x plus 5. Because here base is variable. Right? Now, if you talk about this, 2 to the power x into 2 to the power y, this is equal to what? Sir, 2 X. the 2 to the power y So 2 plus to the power x plus y. X plus right y. Makes sense. So it doesn't matter if it is variable, if it is constant, right? But it should be same. But yes or no? No, base should be same. So the only condition is base should be same. Base should be same. Right? Anyone have any doubt in this? Super easy. We have already done that, right? So first property is clear. Okay, very good. Now second property. Second property is this. 1 by 2 can be written as, tell me. 1 by 2 can be written as 1 to the power 1 by 2. 2 to the power minus 1. Yes or no? Reciprocal wala, right? The meaning of reciprocal is what? Tell me. The meaning of reciprocal is means it is divided. Yes or no? Hi and na. Right? Yes. Na? So second property says that if I'm having 1 by x, which means it is division. So this can be written as x to the power minus 1. Okay? Na? Yes or no? It is x to the power minus 1. Sir, can you once more explain how 2 to the power minus 1 will become 1 by 2? No, this is the property, right? If you think about it, if I'm writing 2 to the power 1 into 2 to the power 1, Anna, think about it logically, right? This is what? 2 to the power 2. Yes, sir. Yes, sir. If I say 2 to the power 1 divided by 2 to the power 1, this is equal to what? 1, sir. 1. 1. So anything to the power 0 is 1 actually. It is called as 2 to the power 0. समझ में आ रहा है? Right? That is your third property. We will study that. Third property is anything to the power 0, this is equal to 1. Anything to the power 0 is 1. Okay, right? So now tell me, if this is like this, can you say it is 2 to the power 1, right? Minus 1 higher na? Tell me, yes or no? 2 to the power 0 is 2 to the power 1 minus 1. Yes, sir. Right? Yes? Yes, sir. Anna? Yes, yes. Tanushree. So it is 2 to the power 1 into 2 to the power minus 1. Yes or no? Using first property, agree? Yes, sir. Right? So can you see that, sir, this is basically 2 to the power 1 into 1 by 2. Right? Using second property, है ना? So basically, when you talk about division, है ना? So you are reducing the power. You are reducing the power. So reduction in power means you will subtract the power, na? Hi, tell me. Indirectly, we got answer 1 only, sir. 2 and 2 will get cancelled and 1 will be. I'm just trying to explain that when you talk about addition, है ना? When you talk about addition in power, it means you're multiplying something, है ना? So obviously, if you are dividing, it should be subtraction, yes or no? Right? And subtraction means power should be negative or positive? Negative. Negative. Got it? So this is the property. I hope all of you understood this. Tell me. Second property? Yes, sir. 1x is equal to x minus 1. Okay. That is very basic third property. Okay. Now, tell me this. If I'm having this, a to the power, yes? Sir, I want to ask, sir, if a to the power 0, sir, you told that a to the power 0 means 1, sir, means a value is 1, sir. See, not a value is 1. Anything. Sir, if we, sir, like an example, and To the power 0. a has 1. Sir. Anything to the power 0 is equal to 1. Na? Right? What's the meaning of this? Tell me, what is the meaning of this? Means anything is not multiplied even once. Yes or no? Ayana? Yes, sir. Sir, so it will be 0, sir. No, na. It will be 1, na. Okay.
Why it will not be 0? Think about it. If it will be 0, logically, if I'll say anything to power 1, it will be 0 into that anything, yes or no? Think about it, yes or no? sir. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, Sir, sir. then everything will be 0, 0, 0, 0. ये है ना? Think about it. So I can say, sir, if anything to the power 0 is equal to 0. Suppose if I take this, right? So what will happen if I'll just multiply anything to the power 0 into anything? Right? Enough. Right? Now tell me, it should be equal to what? Tell me, it should be equal to what? 0, 0. No, anything power 0 into anything. It should be anything only, na? Yes, sir. Because what is the meaning of this? It means anything is not multiplied at all. एक बार भी multiply नहीं हुआ है ना? And then एक बार मैंने multiply कर दिया, right? Okay, so मेरे पास एक ही बार multiplied रहेगा ना? Yes or no? Everyone, tell me yes or no. So if I take this, it is wrong, no? It is wrong. Because if I consider this, it should be 0, but वो तो गलत है. So anything to the power 0 is equal to 1, right? Okay, कुछ भी रहे. And the physical meaning of that, right, or the logical meaning of that is any number, right? Any number, if you're not even multiplying, if you're not even writing that number, right? Then there'll still be 1. Yes or no? Tell me. So, sir, power to the 1 meaningless है ना, sir? Wait, is a 2 है. 2 is equal to what? 1 into 2 होगा. 2 is basically 1 into 2. हाँ है ना? Yes or no? Yes or no? Right? Yes, So sir. 2 to the power 1 is basically 1 into 2 to the power 1. Yes or no? Yes, sir. है ना? अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा ही नहीं, मैंने यहाँ पे 2 रखा ही नहीं, या डिवाइड कर दो 2 से, 2 by 2 डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 to the power 1 by 2 to the power 1. Think about it logically, है ना? So this is what 2 to the power 1 into 2 to the power minus 1. Yes or no? अभी मैंने बताया ना? Yes or no? Yes, sir. And this is equal to what? This is equal to 1, right? Yes, And sir. but according to first property, I'm just using the same thing. It is equal to what? Sir, 1 is equal to 1. 1 minus 1. 1 minus 1 is equal to what? 1 minus 1 is equal to 1. So it is what? 0 is equal to 1. अब समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Actually, I'm using the same thing, है ना? मैंने जो पहले बताया अभी भी वही बोला. मैंने बस उल्टा ऑर्डर बोला. Yes or no? Yes, sir. So actually, it is only one thing. It is just you have to understand, right? And now you have to understand the meaning. When I'm saying anything to the power 0, it means that number is not multiplied even once, right? So if any number is not multiplied even once, then we are left with only 1. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. Chalo. So everyone got this property. So Sir, if we write like 2, sir, and if we write like 2, sir, and nothing in the power is given, sir, it means it's 1, no, sir? yes. If Sir, you or just 0. 2 is basically the power 1, no? Sir, Right? then, for writing 2 to the power 0, they will give like 2 to the power 0. No? 2 to the power 0, yes, because 1 is anything to power 0. So if 1 is given, you can write 2 to the power 0, 3 to the power 0, 4 to the power 0, anything, right? And now that's why anything to power 0 is 1. Okay? Okay, Sir, but 2 into 0 is 0, sir. No, tell me, what is the meaning of 2 to the power 0? 2 into 0 is Sir, it's different. not, Zero is different. sir, it's not even getting multiplied once. Exactly. 2 to the power 0 just means कि 2 is not even multiplied once. 2 है ही नहीं वहां पे. तो अगर Yes, 2 sir. नहीं, Yes, sir. Yes, sir. 1 है ना? Right? Yes or Yes. no? And 2 into 0 is something totally different. Power में बात हो रही है. Power में means how many times any number is multiplied. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Right? Okay. So fourth property मैं यहाँ पे अब नीचे लिख रहा हूँ. Fourth property. So suppose 8 to the power m divided by 8 power n. This is equal to what? Now you tell me. This is equal to what? Sir, a to the power m into a to the power minus n. Very good. And this is equal to what?
Sir, a to the power m minus n. Awesome. Very good. Very good. Yes, sir. Very good, Akash. Correct. So this is 8 power m minus n. Yes or no? Hi, Anna. Hi, Anna. It's like you are writing the Yes. same properties every time. Yes. Actually, it is same thing, but it is told as different property, है ना? And that's very good that if you are realizing that sir एक ही चीज तो है बस घुमा फिरा के लिखा गया है. Yes or no? हाँ सर. हाँ सर. सर बस दिमाग खराब करने के लिए लोग ऐसे करते हैं सर. इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉमन सेंस रखो, सब कुछ एक जैसा लगेगा, है ना? सब लगेगा सर ये तो कॉमन सेंस है सर. Yes or no? Right? But you have to realize कि तुम्हारा कॉमन सेंस बढ़ चुका है comparatively, है ना? Okay. Now अब एक चीज बताओ, think about it. 8 power m का whole power n, इसका मतलब क्या है? ये बताओ, तुम लोग बताओ. Try Sir, again. sir, a to Sir, the a to the power m into a to the power m. नहीं. sir, a to the power m is getting multiplied with the number of Yes. Awesome. am into n. Sir, a to the power m into n. Yes. N. 8 power m is multiplied n times. Yes or no? Yes or no? Tell me. What's the meaning of this? Yes or no? Sir, n मतलब कितने बार होगा सर? N times. जितना n times. वैल्यू होगा n उतने बार. जितना नंबर होगा times. उतना. 10 times क्यों सर? Now, अब बताओ तो ये सर पता नहीं सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा. Wait, I'll mute everyone. Sir, 10 times. Okay. Right. है ना? चलो. Now, I am saying, think about it. I'll take example, right? First of all, let me clear this. Now, using first property, can you write this 8 power m plus m plus m plus m dot dot dot? Not 10, it is n times. Yes or no? N, not 10. Okay. N for naughty, right? Anna, naughty. You guys are naughty, right? Okay. So अब बताओ अगर तुम if you add m n times, it will be what? I guess all of you know that sir, consecutive addition is nothing but multiplication. It will be m into n. Yes or no? Raise your hand. Yes or no? Very good, Shrey. Anna, yes or no? Right? Yes. So अब example देखो. Everyone look for this example. 2 to the power 3 whole power 2. So what is the meaning of this? It means 2 to the power 3 into 2 to the power 3. Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? सबको समझ में आना चाहिए. जिया, कार्तिकेया, संध्या, तनुश्री, तनुश्री 1, तनुश्री 2, सानवी. Everyone should get this. Shreya, Ananya, Sinchana, Priya, Bindu, Aditya, right? Very good. Awesome. Vihan, right? Okay. So it is 2 to the power 3 plus 3. And what is this 2 to the power 3 plus 3? This is 2 to the power 2 into 3. Got it? हाँ या ना? सबको समझ में आ गया? अब बताओ, sir, same ही चीज तो बार बार कर रहे हैं, right? I'm doing the same thing again and again. Yes, exactly. So I can say, right? And we know that bracket का मतलब क्या होता है, right? When you talk about bracket is multiplication of, right? So I hope all of you understood the meaning, है ना? So let us see one more example. Example: x to the power 2 whole power y is equal to what? Tell me. X power 2 whole power y is equal to what? Tell me. Very good, Nabil. Awesome. X to the power 2y. Okay. Anyone have any doubt on this? Right, correct. X power 2y लिखो तो y2 लिखो, same ही है. Anyone have any doubt on this? Anyone? किसी को भी दिक्कत है? हाथ उठा दो. किसी को भी? नहीं? Okay.
Okay guys, right? So अब बताओ, if we talk about all these properties, याद रखने का है क्या? Tell me, do you think कि तुमको कुछ याद रखना पड़ेगा और ये कॉमन सेंस है? Tell me. अगर कोई बोलता है कि सर हमको याद नहीं था, राइट, अगर कोई बोल रहा है कि इससे गलत हो याद नहीं था, तो मतलब वो पढ़ाई करी नहीं, वो रट रहा है. दिस इज टोटली कॉमन सेंस, है ना? ओके, राइट, ऑसम. अब देखो, अब फिफ्थ प्रॉपर्टी. अब फिफ्थ प्रॉपर्टी देखना, है ना? Now suppose we have a to the power x, a to the power x into b to the power x. Tell me, a to the power x into b to the power x. अब ध्यान दो, यहाँ पे बेस क्या है, सेम के डिफरेंट? Tell me, here base is same or different? Different. Can I use any of the previous properties? Tell me, can I use any of the previous properties? No, है ना? So let us try to understand कि भाई ये है क्या, ये है क्या? Okay, ठीक है sir, I understand. I cannot use that. So let us take an example first, है ना? Because examples से ज़्यादा अच्छे से मिल पाता है. So let us take this example, right? Let us take example first. 2 to the power 3 into 3 to the power 3, है ना? बच्चे की तरह सर, कॉमन सेंस. हमको क्या है, हमको बेसिक तो आता है. n x है, दिस इज x, तनुश्री x. माय x लुक्स लाइक n, ठीक है ना? राइट, बेस स्ट्रांग रखना है. सो सर मुझे बेसिक आता है ना? हम लोग रटते नहीं है, हमको एकदम फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग है. तो हम ये लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3. Yes or no? Yes or no? Right? Awesome, very good sir. स्मार्ट है सर, ऐसे कैसे? आप पढ़ाए हम लोगों को, स्मार्ट रहेंगे ही. तो क्या करेंगे सर, जोड़ी बनाएंगे सर. ये दोस्ती करेगा इससे, ये दोस्ती करेगा इससे, और ये दोस्ती करेगा इससे. क्या बनाएगा? राइट, दोस्ती करेगा, है ना? है ना? सो 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3. अरे सर कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? टेल मी, एनीवन, क्या दिख रहा है? यस, वेरी गुड सिंचना. सर एक्चुअली ये रिपीट हो रहा है सर 3 times. यस और नो? दिस इज रिपीटिंग 3 times. 2 into 3 3 times रिपीट हो रहा है. यस और नो? रेज योर हैंड. हाँ या ना? बिकॉज व्हाट इज एक्सपोनेंशियल रेडिकल? सर लिखने का तरीका सिंपल. 2 into 3, यस, है ना? राइट, ऑसम. सो कैन आई से सर ये तो अगर पावर सेम हो गया तो हम कॉमन लेके बाहर कर दिए. यस और नो? दैट इज व्हाट वी डिड. राइट, दोनों को साथ ले लिए. यस और नो? Anyone have any doubt in this? Tell me, anyone have any doubt in this? So what should be this property? What should be this property? This property should be a to the power a into b to the power whole x. हाँ या ना? हाँ या ना? Everyone. Aditya, Jia, Vihan, right? Awesome. Okay, चलो. Right, awesome, है ना? Very good, awesome. कितने अच्छे लोग हो तुम लोग, right? कितने अच्छे लोग हो, एक बार में जल्दी समझ जाते हो, है ना? Okay, very good. ठीक है. So now I hope all of you understanding this कि भाई हो क्या रहा है ना? So let me ask you this. Now तुम लोगों को कोई डाउट है कि अब तक कोई डाउट है? अब तक कोई डाउट है? सिंचना, नवीन, बिंदु, संध्या, विहान, प्रिया, कार्तिकेया? नो, राइट? ओके, मुझे डाउट है. मेरा डाउट कौन क्लियर करेगा? Suppose if I'm having 3 into, if I'm having 2 power 3 into 3 to power 5, can I write this? No, right? Because power is not same, na? Right? But what I can do, I can do this. 2 to the power 3 into 3 to the power 5 can be written as 3 into 2. Sorry, 3 plus 2. Yes or no? 3 plus 2. Yes, sir. Then it can be written as 2 to the power 3 into 3 to the power 3 into
3 to the Three. power. Yes, sir. 2 into 3 to the power 3 into 3 to the power 2. Exactly. So now it can be written as 2 into 3 whole power 3 into 3 power 2. Makes sense, right? है ना? Yes, sir. पजल की तरह खेलते रहो, इधर उधर करते रहो, बस, है ना? मजा लेना है सर गेम का। बस मजे लेना है, बहुत सर मजे आए सर मुझे आप लेने नहीं देते हो म्यूट करके। क्योंकि तुम लोग बोलने नहीं देते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत बकबक करते हैं। ओके। नाउ अब किसी को डाउट है? टेल मी, एनीवन हैव एनी डाउट्स? नो सर। सर आपको डाउट था ना सर? मुझे डाउट है, यही तो। अगर तुम नहीं पहले पूछो ना सर। सपोज दैट यू गाइस हैव एनी डाउट और नॉट। सर तभी तो बोला था आपको डाउट है। Okay. Now, ठीक है. My question is this. My doubt is this. Let me ask, right, you guys. If I'm having 8 power x, right? 8 power x can be option A, integer. Option B, rational number. Option C, real number. Option D, सब कुछ। all. अनरियल। अनरियल। सर इंटीजर। सर रैशनल नंबर भी हो सकता है। सर इंटीजर होगा सर। सर ऑल ऑफ द अबव होगा। सर ऑल ऑफ द अबव होगा। all. नो सर ऑल नहीं होगा सर। एक बार आंसर इंटीजर होगा इंटीजर। एक बार आंसर गेस करो ना। सर रैशनल नंबर। all हो गया, सुन लिया, इसीलिए म्यूट कर देते हैं। नहीं सर सर इंटीजर में फ्रैक्शन भी होता है ना सर? इंटीजर होता है इंटीजर सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव। कौन बोल रहा है होता है? इंटीजर और फ्रैक्शन कौन बोल रहा है सेम है? सर इंटीजर में फ्रैक्शन होता है या नहीं पूछा तो श्रेय तो पूछ रहा है, आदित्य बता रहा है। श्रेय, अभी मैंने क्या बोला मैथ्स में कि अगर कोई बोलता है कि याद नहीं आ रहा है, मतलब तो रट्टा मार रहा है। नहीं सर, पर ये तो रट्टा है चीज। फ्रैक्शन का डेफिनेशन है फ्रैक्शन पार्ट, मतलब पार्ट। सर कटा पिटा। पार्ट ऑफ अ होल। राइट? इंटीजर इज व्हाट? इंटीजर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव and negative, and whole number and its negative part, right? है ना? Okay. Now tell me, so how many of you tell integer? Raise your hand. I'll just count the number of hands. Integers कितने लोग बोल रहे हैं? से लोअर हैंड करो। हाथ उठा लो, मैं हाथ काउंट करूंगा। सर मैं नहीं बोल रहा सर, मैं हाथ नीचे नहीं करने वाला। तो विहान और श्रेया बस। सर Okay. नहीं सर मैं नहीं बोल रहा सर, मैं हाथ बस ऐसे ही रेस कर रखा है, मैं पीछे चला जाऊंगा। अब अभी बताओ कितने लोग बोल रहे हैं? श्रेया एक, ओनली वन। ओके। रैशनल नंबर आकर्ष ओनली वन। रियल नंबर सर रियल नंबर में इरेशनल भी आता है ना सर? रियल नंबर में सब कुछ आता है ना? हाँ सर आते हैं ना। हाँ सर अनरियल नहीं आता ना सर? नहीं, अनरियल नहीं आता है। सर अनरियल नहीं होता सर, इमेजिनरी होता है। हाँ वो तर से नहीं सर, वो सेम नहीं सर, अनरियल कुछ होता ही नहीं। नबील, तुम हमको बता रहे हो कि आकर्ष को बता रहे हो? सर आकर्ष को बता रहा हूँ। गुड। ठीक है। सर वो आपका नाम ले रहा था। सर मैं आपको क्या बता। सर अभी ऑल बोलो सर, सब लोग हाथ उठाएंगे। The thing is ना, that is my doubt, right? Because when you talk about the power, है ना? Okay, when you talk, okay, I'll start. ऑप्शन डी के साथ जाना है सर। See, when you talk about the power can be anything, right? Power can be anything, right? Except और irrational. irrational. ठीक है? So the best answer is this. रैशनल ओनली ना सर, देखा सर मेरे भैया बताए थे सर। When you talk about
भी आएगा करके बोलते हो तो इंटीजर क्यों नहीं आएगा? हाँ नहीं, रैशनल तुम बोल रहे हो तो उसमें ऑलरेडी इंटीजर है, यस और नो? Sir, Right? because any integer can be written in rational. So this is there, but rational number ना, so it means integer है, right? है ना, समझ में आया? ठीक है, तो integer best answer is rational number. If you select only one answer ना, then your answer should be Sir, rational. integers will be not there because integers come under rational number only. Yes, yes. Okay. Now you might ask, sir, okay, sir, right? You are saying that if I'm having power, this x can be anything. It can be fraction also. है ना? So we know that if this is, tell me, if x, right, is natural number or whole number or negative part, right? We'll either get integer or fraction. हाँ या ना? Yes or no? Right? Yes, sir. What about if this x, if this x becomes fraction, right? अब हम सोचेंगे बाद में, ठीक है? अब समझ में आया ना? So if thing is x can be anything, x can be fraction, power can be fraction, right? We'll see this, है ना? रूट में चला जाएगा ना सर? क्या? सर if it will be fraction सर वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा ना सर? स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट सिर्फ 1/2 होता है. It can be, we will discuss, it is totally different. One whole chapter will be there which will be covering in here only, है ना? Right? Sir, quadratic equation में आप वही पढ़ा रहे. नहीं वो अलग है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ. बट एनीवेज, फिफ्थ समझ में आ गया? फिफ्थ समझ में आया? फिफ्थ प्रॉपर्टी. नाउ सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज एक्चुअली इजी. सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज एक्चुअली वेरी इजी. a to the power m. सर आपने सिक्स्थ प्रॉपर्टी पहले ही बता दिया सर. हाँ सर आपने सिक्स्थ को फिफ्थ कर दिया. पावर x into b to the power x. सर थर्ड वाला सबसे इजी सर, n in power to the 0 equals to 1. b to the power m divided by b to the power m is equal to what? A to the power m into b to the power minus m. am in हाँ sir, am into bm minus m. Or just a by b to the power whole m? सर वो भी हो सकता है. सेम है Yes, sir. m and m कॉमन है. राइट, सेम है. यस ले लिया. हाँ या ना? Sir, a by b हाँ into sir. a by b m. Same power समझते. Concept check. Concept. 2 to the power 3 plus 3 to the power 3. Sir, sixth property उतना ही sir. नहीं ये 6 प्रॉपर्टी, हाँ 6 प्रॉपर्टी बस इतना ही है. ठीक है. क्या कॉन्सेप्ट चेक है सर? अभी थोड़ी देर पहले ही तो करवाया था. हाँ वही बता रहा हूँ ना. इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी, इज इक्वल टू व्हाट? सर अभी तो आपने बताया सर. अभी आप हाँ sir. सर it's like 2 into whole cube sir. Sir, 2 into 3 to the power sir, ये whole to the power x, ये sir 3 sir. इसीलिए बोलते हैं कि जब सबसे पहले पढ़ाई करना होता है ना, सबसे पहले अपने पास क्या रखना होता है? कॉमन सेंस. ये एडिशन है फिर ये. ओह सर 2 plus 3 whole square whole cube. तो आंसर तुम ये बोल रहे हो कि ये बोल रहे हो? बताओ. दिस इज ए, दिस इज बी. आंसर इज ए और बी. और सी इज, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए. और सी इज, Sir, a sir, a. सी इज, C is धोखा. धोखा तो नहीं. कौन सा ऑप्शन है सर? सर 1 मिनट सर. सर इतना बड़ा ऑप्शन धोखा कोई नहीं है. 1 मिनट सर. धोखा कोई नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं सब. सर सर ये आप क्या लिख रहे हो सर? इस बार तो आप ही रिकॉर्डिंग करके ये सब लिख रहे हो सर. ये गलत है बताओ ना सर. आप ही ऐसे कर रहे हो और आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो सर. नहीं है सर, बेवकूफ बना रहे तुम लोगों को. सर 1 मिनट सर 1 मिनट. सर मुझे धोखा इंग्लिश कोई में नहीं हिंदी है. समझ में नहीं आता सर, आप पढ़ के बताओ. धोखा की जगह आप ढोकला कोई नहीं है करके लिख दो. वेरी गुड, ऑसम. ठीक है. बेवकूफ बना रहे. सर ऐसा लगता है कि ऑप्शन धोखा ही है सर. कॉमन सेंस रखो पहली बात, ठीक है? कॉमन सेंस.
पहली बात देखो, जब पावर की बात कर रहे हैं, राइट, खुद सोचिए, राइट, when you say this, it is basically what? 2 into 2 into 2 plus 3 into 3 into 3. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Can you write it as 2 plus 3 into 2 plus 3 into 2 plus 3? Are they equal? Are they equal? No, sir. No, sir. Yes, No, sir. no. कैसे? No. 2 into 2 into 2. Eight. सर प्लस है उसके बाद सर. Plus 2 into. सर ऑप्शन सी है. Yes, sir. Equals to 225. 5. सर 125 कहाँ से इक्वल हो गया सर? मतलब कहाँ से? 35 है ये 125 है, राइट? वही तो बोल रहा हूँ सर, ऑप्शन होता ही है. हाँ, तो ये धोखा है, ध्यान से, धोखा. ये भी गलत है, ये भी गलत है, राइट? ठीक है. और मैं ये क्यों ढोकला आप होगा धोखा. आंसर है ढोकला. सर वो पूरा ऑप्शन क्या है सर? आंसर है ढोकला. नहीं है, बेवकूफ बना रहे सर. ठीक है. धोखा नहीं होना चाहिए था सर. ढोकला कोई नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं. ओके, चल हो गया. अगली बार से तुम्ही को बना देंगे, ठीक है? आदित्य नहीं बना रहे हैं. ठीक है, चलो. तो ये समझना, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यूजुअली राइट, हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं और लिख देते हैं ये चीज, है ना, जो कि बहुत बड़ा गलती है, पाप है ये. ओके, ऐसा बात नहीं करना है, राइट? यस और नो? ओके, चलो. अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी देख लिया, कॉमन सेंस है. अब अच्छे से सवाल सॉल्व प्रॉपर्टी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही है क्या सर? यस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं होता है ना, है कि नहीं? कॉमन सेंस लगाओ कि जो पावर, वो पावर होता किसके लिए? टेल मी, पावर होता किसके लिए है? सर मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट, है ना? बिकॉज ये दोनों सेम चीज होता है. तो खुद बताओ कि अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ही मतलब ही ये पावर है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं क्या? है कि नहीं? खुद सोचो, राइट? अब देखते हैं, एवरीवन. Now this concept, this question is like 5-star question. Oh wow. Directly सर 5 5 स्टार होटल सुना है सर, आज पहली बार 5 स्टार क्वेश्चन. सर डायरेक्टली कॉलेज में चले जाएंगे सर इस क्वेश्चन से सर. देखो पावर, देखो क्वेश्चन, देखो 2 to the power 1/2 पावर n minus 3, ठीक है, To the power. is equal to 2 to the power 6. Find n. अब बताओ, जब ये सवाल दिया गया तो इसमें कौन कौन से चैप्टर और कॉन्सेप्ट यूज हुए, हमको बताओ. सर इक्वेशन, सर इक्वेशन. एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स एंड लीनियर इक्वेशन. यस और नो? देखो कैसे सर दो देखो चैप्टर. सर मैं कितना समझदार हूँ. हाँ, तुम सब समझदार हो यार, कौन बड़ा समझदार नहीं हो? कल जो टेस्ट सर किया मैं था अकेला समझदार हूँ सर, सब लोग बेवकूफ है. कौन मानता है बेवकूफ? सर मैं अकेला बेवकूफ हूँ, सब लोग समझदार है. नहीं तो मैं अकेला समझदार हूँ, सब लोग बेवकूफ. सर कल के टेस्ट में ही सर इसका यूज हुआ था सर. हाँ Awesome. सर, हाँ सर, हाँ सर. Solve करो everyone. आप देखो. I have a doubt sir. n minus, wait. थांबा, ठीक है. ओके. 3. 3 power by 3 into 1/3 to the power. Okay, so wait. 3 power minus 1/3 to the power 1/3 whole divided by 3 power. सर आप क्वेश्चन बनाने ना सर. हाँ, सर केक मत बनाओ सर, लेयर के ऊपर लेयर. सर क्या सर? सर आप केक एक्सपर्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ्स में भी केक बना दोगे, वो भी नंबर का. सर 0 अंडा नहीं दे तो दो, 1. अंडा दे दो, अंडा दे दो, अंडा केक दे दो Okay. ना. सर कैंसिलेशन. is equal to
सर इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था सर। फाइंड n, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, है ना, आप खुद बताओ कि इसके ऊपर वाला प्रॉब्लम और इसमें कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस है क्या? टेल मी। नहीं सर, पर मुश्किल है सर बहुत। क्यों मुश्किल है बताओ, क्यों मुश्किल है? सोच अपने आप से। पहली बात, बड़ा है, साइकोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। तो जैसे ही हमें प्रॉब्लम दिखता है ना, बड़ा दिखता है ना, तो साइकोलॉजी क्या होता है, अरे बड़ा है, ब्रेन बोलता है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है। एग्जैक्टली, है ना। तो अगर हम उस साइकोलॉजी को अगर अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे ना, तो हमें सब क्वेश्चंस काफी इजी लगेगा, है कि नहीं? टेल मी, यस और नो, राइट सर ना। पहले तो मल्टीप्लाई करना है सर वो सबको। हाँ, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ सबको ही, हम लोग ये करेंगे, इस बात काउट खेलेंगे, ठीक है, राइट। सर मुझे एक डाउट है सर। पूछो। सर इन द फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, है ना, we will use multiple properties. So, okay, now first property that we can use is fourth property, 2 to the power this into this. We can write as 2 to the power n minus 3 by 6. Sir, a to the power x by a to the power y, sir. Wait, yes or no? 2 to the power n minus 3 by 6. If you multiply this and this, right? yes sir. Divided by 2 to the power 1 by 6. Step by step. तोड़ते जाओ, हाँ या ना? हाँ सर। This can be written as सर मेरा नेटवर्क इश्यू सर, एक और बार एक्सप्लेन करें सर। मैंने बस फोर्थ प्रॉपर्टी यूज किया है, 2 पावर 1 by 2 होल पावर n minus 3 by 3 is 2 to the power n minus 3 by 6 by 2 सर power वो हो जाएगा सर, to get 2 to the power n minus 3 by 6 minus, yes or no? Yes or no? yes And this sir. is 2 to the power n minus 4 by 6, हाँ या ना? अब बताओ, सर तो फिर वो हो जाएगा n minus 4 by 6 सर। yes or no? हाँ या ना? यहाँ तक में मुश्किल था? टेल मी। नहीं सर। हो जाए सबको ही, जनता, गांव वालों, राइट? सब लोग बोलो ना। सर फिर से बोलो ना सर सर। हमें ना 52,000 दो सर तब समझेंगे। ओके, अब देखो, अब सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म सबको ही, सब सेकंड टर्म देखेगा। व्हाट इज दिस? दिस इज, अब मैं इसको फर्स्ट टर्म में रब कर दूं, फर्स्ट टर्म रब कर दूं ना, ना सेकंड टर्म देखो, दिस सर नहीं सर। -1 by 6, 3 to the power -1 by 6 whole divided by 3 to the power minus n minus 3 by 6, yes or no? yes sir. minus -1 कहाँ चला गया सर? -1 नहीं है सर। ये माइनस बाहर मल्टीप्लाइड है ना श्रेय। yes sir, yes sir. into n minus 3 is minus n minus 3, right? Bracket का मतलब क्या yes होता है? sir. हाँ सर समझ में आ गया सर। This can be written as what? Tell me. This can be written as 3 to the power 3 to the minus n by 6 6 by minus, power minus n plus 3 by 6 नहीं प्लस, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, कोई स्किप नहीं कर रहा, राइट? सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? सबको यहाँ ध्यान Yes. दो, राइट? सबको यहाँ इस स्टेप में ध्यान दो, राइट? श्रेया, देते हैं बिंदु, सर नहीं समझ आया सर। कौन सा स्टेप नहीं समझ में, बताओ? सर फर्स्ट टर्म ही नहीं समझ में आया। हाँ सर। -1 by 3 पावर 1 by 2 क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई होता है यूजिंग प्रॉपर्टी 4। यस So -1 by 6। -6 तो मैंने वही लिखा ना। हाँ सर। सेकंड में क्या होता है? दिस मल्टीप्लाई बाय 1 by 3 क्या होगा? -n minus 3 by 6 होगा। हाँ सर यस। वही लिखा, हाँ या ना? हाँ सर। यस इसमें सर। आया, यही तो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी। नेक्स्ट विच प्रॉपर्टी वी विल यूज? बेस सेम है तो पावर, है ना, 8 power x by 8 power y is equal to 8 power x minus y, yes or no? This is property. हाँ सर। yes sir. 3 to the power minus 1 by 6 minus, अब ये होल पावर minus n minus 3 by 6, yes or no?
हाँ सर। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। प्लस होता है। प्लस सर। So can I say, so it is 3 to the power n minus 3 by 6 minus 1 by 6. इसको आगे ना लिख के पीछे लिख रहा हूं मैं और इसको आगे लिख रहा हूं, हाँ या ना? बिंदु लिख सकता हूं मैं? ध्यान, 8 पावर x प्लस y लिखो या 8 पावर y प्लस x लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नो सर। No. And what is this? I'll rub everything. 3 to the power n minus 3 by 6 minus 1 by 6. This is equal to what? 3 to the power what? n minus 4 by 6, हाँ या ना? 6 LCM ले लिया, minus 3 minus 1 minus 4, right? Don't worry, घबराने की बात नहीं है, मैंने लिखा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? राइट, मैंने यहाँ लिख रखा है ना? ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है. So this is your first term, right? This is your this वाला term, ब्रैकेट वाला, ये वाला, and this is your second 3 वाला term, ठीक है? सर ये कब लिखे सर आप? जब मैं तुम लोग को वेट करवाया, ओके? सर आप स्क्रीन स्टॉप कर दिए थे ना सर? So 2 to the power n minus 3 by 6 minus 1 by 6 is 2 to the power 2 to the power, ये पावर है, ठीक है? n minus 4 by 6 और यहाँ पे 3 to the power n minus 4 by 6. Yes or no? Raise your hand. Yes or no? Anyone have any doubt? यहाँ पे पूछो, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर, ऐसा नहीं है ना? सर मुझे आ गया सर, मुझे आ गया। Okay. Now which property is using here? Tell me. Power सर सर 2 into 3 to the power n minus 4 बेस। Awesome. See कौन है ये? आदित्य है ये, आदित्य। आकर सर ए फॉर आदित्य। Right? And this is equal to what? 6 to the power minus 1. So this is what? 6 to the power this is equal to 6 to the power minus 1. Right? Tell me. तो अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा. n minus 1 n minus 6 सर मतलब कि n minus 4 by 6 equals to minus 1. Yes. So what is n? -6 plus 4 -2। Minus 2. सबको समझ में आ रहा है ये? सर आप बोले 6 to the power कुछ होगा? नहीं मैंने नहीं 38 मैंने बोला ना, तो इसका मैंने बोला 6 to the power समथिंग है ना? सर ये ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं है सर। बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं है, बेसिक है, बेसिक प्रॉब्लम है. तो डॉट डॉट मत, सी गाइस प्लीज डॉट डॉट बहुत बार मत लिखो ना, मैसेज फिर सारा गायब हो जाता है. एक बार मैसेज कर दो. यस तनुश्री, राइट? मैसेज में ऑन व्हाट्सएप 1 सेकंड, ठीक है तनुश्री? ओके. नाउ एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? समझ में आया सबको? So this is like application है ना, ये application है, right? Okay. Now if you talk about the concepts are basic properties, but क्योंकि multiple properties use करना होता है ना, इसलिए थोड़ा सा difficult हो जाता है. Don't worry, हम लोग easy काउट खेलेंगे, है ना? चलो easy काउट. Everyone ready for Kahoot? Kahoot time? Yes sir।